माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने कहा है कि मजबूत क़यादत और अवामी फलाह का खुलूस हो तो गैर मामूली तरक्की मुमकिन है और तेलंगाना ने इस बात को साबित कर दिखाया है। लंदन में जारी ब्रिज इंडिया वीक 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने पायदार तरक्की के जरिए आलमी मईशत को आगे बढ़ाने में तेलंगाना का किरदार के मौजू पर कुलीदी लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के 9 साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना ने जो कामयाबियां हासिल की हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल है। केटीआर ने बताया कि सिर्फ 3 बरसों में इंजीनियरिंग का शाहकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके मुल्क को हैरतज़दा कर दिया गया। टीएसआई पास के तहत 28,000 सनतों को मंजूरी दी गई, जिसके नतीजे में 3.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी तेलंगाना में आई। केटीआर ने सरमायाकारों से अपील की है कि वो हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए तेलंगाना को पहला ऑप्शन समझें, क्योंकि ये एक तरक्की पसंद रियासत है। Red tape, of course, has come down big time. But in Telangana, we are ranked today as the state with the most ease of doing business in the country, as per Government of India and Niti Aayog. And there is a reason why we have been able to achieve that. The reason being, with the same set of officers, the same set of people, the same set of bureaucracy, our leader, Shri KCR, has chosen to disrupt the way we govern and disrupt the way we actually brought out laws and legislations. The first piece of legislation I will talk about quickly is something called as the TS-I-PASS. Now the TS-I-PASS literally it abbreviates for Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. Anyone in this room, for instance, wanted to launch operations in India, and if you had to choose a state, because India is a very diverse country where everything changes every 100 kilometers. Now, India is a country, for those of you who are not familiar, with 22 official languages and 300 unofficial languages, some of which even do not have a script. And for those of you who are wondering, these 22 official languages actually are as different from one another as are probably English, and German and French. So India is a very, very interesting, very, very diverse country. It's more like Europe. It's United States of India with a European sort of composition and a very diverse country. Now the reason why I say all this is because when you start making investment decisions by drawing simpler comparisons, say to a large country like China and India, you'd probably be ending up confused. Because China is a country which has got a lot of homogeneity. It's a country where language and a lot of other things are common across the nation. But in India, like I said, everything changes every 100 kilometers. Therefore, it's important to understand the policies of states where you would want to engage, where you would want to set up a base, and where you would possibly want to enter India through. And Telangana, the policy that I just quickly mentioned to you, TS-I-PASS, is probably the most revolutionary policy, revolutionary law by any Indian government in the last 75 years. What are the salient features? I'll just give you 3. Any of you in this room, if you wanted to start an enterprise in Telangana, it could be a factory or something in the services industry, you would be surprised to know that you do not need any approval from the government. You can hit the ground running. You can actually start on day one with your factory. You don't need the permission of the local municipality or the village panchayat or even the state government. If you have a piece of land that is already owned by you, if you already are allotted to you, you can start construction on day one. Parallelly, simultaneously, we request that you submit an application online on the TS-I-PASS portal. Now what does that do? Once you start operations for regulatory compliance, when we get your information,
We promised all clearances in less than 15 days. 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।